11 जुलाई 1967 बात चल रही थी। The Murli of July 11th, 1967. The topic being discussed was सृष्टि में कोई जलमय नहीं होती है कि सारी सृष्टि जल में डूब जाए। there isn't any total flood in the world, so that the entire world would be drowned in the flood. सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है। There is everything in the world, the human beings, the animals, agriculture, and so on. क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। It is because everything is required for the human being. शास्त्रों में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रंग है। What has been depicted in the scriptures is wrong. प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। The total annihilation means that everything becomes merged. Nothing is saved. अब आत्माएं अनादि हैं। But the soul is without beginning. परमात्मा अनादि है। The Supreme Soul is without beginning. सृष्टि अनादि है, सृष्टि के 5 तत्व अनादि हैं। The world is without beginning. The 5 elements of the world are without beginning. तो जो अनादि चीज है वो खलास कैसे हो जाएगी? So how will something which is without beginning be finished off? हाँ, रूप बदल जाता है। Yes, the form changes. नरक से From hell, स्वर्ग बन जाता है। it becomes paradise. बाकी बिल्कुल न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। But it doesn't ever happen like this, that neither paradise nor hell would remain. नरक जाता है तो Hell goes away, then स्वर्ग की स्थापना होती है। the establishment of paradise takes place. तो ये सुख दुख का नाटक है। So this is a show of happiness and sorrow. प्रलय होती नहीं है। The total annihilation doesn't happen. ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। This world cycle keeps on rotating. बच्चों को The children आदि से लेकर अंत तक सारा याद रखना है। have to remember everything from the beginning till the end. ये आदि में क्या हुआ What happened at the beginning, और मध्य में क्या हुआ और अंत तक क्या होता है। what happened in the middle, and what happens till the end. मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं। The human beings remember many types of pictures. मेले मलाखड़े याद आते हैं। They remember the fairs and the festivals. वो सब चित्र और वो सब मेले मलाखड़े हैं हद के। All those pictures and all those fairs, festivals are limited. और तुम्हारी ये बेहद की याद। And this is your unlimited remembrance. बेहद की खुशी है और तुम्हारा बेहद का धन है। Your happiness is unlimited and your wealth is unlimited. क्योंकि बेहद का बाप है। Because the Father is unlimited. बेहद का धन कौन सा है? Which is the unlimited wealth? ज्ञान धन। A student is saying the wealth of knowledge. ज्ञान धन है बेहद का धन। The wealth of knowledge is the unlimited wealth, जो बेहद के बाप से ही मिलता है। which is received only from the unlimited Father. हद के बाप से हद का धन मिलता है एक जन्म के लिए, वो भी एक जन्म काम आवे ना आवे। The limited wealth is received from the limited Father for one birth, and it may be used or not. और बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का सुख देने वाला धन तो मिलता ही है, साथ ही साथ And from the unlimited Father, the unlimited wealth giving happiness for 21 births is received, and together with this, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। on the basis of 21 births, the account of 63 births is created. अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर, on the basis of one's own efforts. जो जितना पुरुषार्थ करता है
वो उतना धन, स्वास्थ्य, खुशी अनेक जन्मों की प्राप्त कर सकता है. One can obtain so much wealth, health, happiness for many births, as much effort one makes. पुरुषार्थ का रास्ता बाप बताते हैं. The father shows the path of effort. जो रास्ता बताते हैं उसको ही ज्ञान कहा जाता है. The very path that he shows is called knowledge. ये बाप का ज्ञान धन और किसी मनुष्य मात्र गुरु के पास, गोसाई के पास, पंडित के पास, विद्वान आचार्य के पास नहीं हो सकता. Any other human being, guru, holy man, scholar, learned man, teacher can't have the father's wealth of knowledge. ये बेहद की खुशी का धन है जो बेहद के बाप आकर के देते हैं. This is the wealth of unlimited happiness which the unlimited father gives when he comes. हद के बाप से तो हद का ही वर्षा मिलेगा. One will receive the limited wealth from the limited father. बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है. From the unlimited father, one receives the unlimited happiness. रास्ता बताने वाला तो बाप है. अब जो जितना चाहे उतना ले. The father is the one who shows the path. Now, let one take as much as he wants. ऐसे तो सुख होता ही है धन से. Happiness itself arises from wealth. वो विनाशी धन है. That one is the perishable wealth. और ये है, And this one, a student is saying, imperishable. अविनाशी बाप का अविनाशी धन. The imperishable wealth from the imperishable father. इससे अविनाशी सुख होता है. The imperishable happiness arises from it. धन तो वहाँ पर भी अपार होता है. The wealth over there is infinite also. वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है. Over there everything is sato pradhan. और यहाँ सब कुछ तमो प्रधान है. And here everything is tamo pradhan. धन भी दुख का निमित्त बन जाता है. Even wealth becomes instrumental for sorrow. कोई को बहुत ज्यादा धन हो तो भी वो बहुत दुखी रहता है. Someone may have lots of wealth, yet he remains very sorrowful. तो धन तमो प्रधान हुआ ना. Wealth is tamo pradhan, isn't it? वहाँ धन सतो प्रधान होता है. The wealth over there is sato pradhan. धन किसी के पास ज्यादा भी है, थोड़ा भी है, तो भी दुखदायी नहीं होगा. Whether someone has lots of wealth or little wealth, it won't give sorrow. सुखदायी होगा. It will give happiness. तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान थे. It is in your intellects that we were sato pradhan. अभी फिर हमको सतो प्रधान बनना है. Now we have to become completely pure once again. ये भी तुम अभी जानते हो. मनुष्य तो घोर अंधेरे में. Now you know also this, that the human beings are in extreme darkness. तुम्हारे में भी नंबरवार है. You are also number-wise. स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट तो होते ही है ना. There are sweet, sweeter, and the sweetest. Aren't there? इससे भी स्वीट होने वाले हैं. There are some who will become even sweeter than this. वो ही उच्च पद पावेंगे. Only they will receive the high positions. स्वीटेस्ट तो वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं. The sweetest is the one who benefits many. सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं तो उनको स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे. If he benefits only himself, he won't be called the sweetest. बाप भी स्वीटेस्ट है तो सबका कल्याण करता है. The father is also the sweetest, so he benefits everyone. कोई माखी व चीनी आदि को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है. It isn't said the sweetest for any honeybee or sugar and so on. ये तो मनुष्य की चलन के आधार पर कहा जाता है कि ये बहुत मीठा है. On the basis of the human behavior, it is said that one is very sweet. कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है. It is said, isn't it,
This is a very sweet child. सतयुग में कोई भी ऐसे शैतानी की बात होती नहीं है. There isn't anything devilish like this in the golden age. इतना ऊंच पद जो पाते हैं, Those who receive such a high position तो जरूर इतना ऊंच पुरुषार्थ भी किया होगा. certainly must have made such elevated effort. तुम अभी नई दुनिया को जानते हो. Now you know the new world. औरों की बुद्धि में नहीं होगा. It won't be in the intellect of the others. ये कौन सी नई दुनिया की बात करते हैं? Which new world he talks about. तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही ये नई दुनिया सुखधाम होगी. For you it is as if the new world, the abode of happiness, is going to be just tomorrow. और कलयुगी मनुष्यों के लिए 40, 50, 1,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं. And for the people of the Iron Age, there are 40, 50,000 years left. वो समझते हैं कलयुग बहुत दूर है. They think that the Iron Age is very long. तुम समझते हो कि अब कलयुग गया के गया. You understand that now the Iron Age is as good as gone. तुमको पता ही नहीं है They don't know इस विश्व में शांति कब थी. when peace was in this world. तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है It has set in your intellect कि आज से 5,000 वर्ष पहले भी विश्व में शांति हुई थी. that 5,000 years ago from today there was peace in the world. 2,500 वर्ष तक सुख शांति का राज्य चला था. The kingdom of peace and happiness lasted for 2,500 years. सब मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो जाए. All the human beings say, let it be peace in the world. तुम बच्चे जानते हो You children know कि पहले भी विश्व में शांति थी, अब भी विश्व में शांति होगी. that there used to be peace in the world before, and now also there will be peace. 2,500 वर्ष तो अशांति रही. Restlessness remained for 2,500 years. अब शांति कैसे हो जाएगी? Now, how will it become peace? क्योंकि 2,500 वर्ष के बीच में कभी भी बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि पर आता ही नहीं. It is because the Father, who is the Father of the souls, never comes to this world for 2,500 years. अभी आया हुआ है तो जरूर शांति होगी. Now he has come. Therefore, certainly there will be peace. जो शांति की स्टेज में रहेंगे, Those who will remain in the stage of peace, समझेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, who will understand, I am a soul, a form of peace, तो उनको शांति भाषेगी. will experience peace. आत्मिक स्थिति में रहने की बात है. This is the question of remaining in the spiritual stage. बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, आत्मा का रूप ही शांति का है. The Father says, you are souls. The soul itself is a form of peace. The very form of soul is that of peace. अशांत तब होती है जब तामसी देह में आती है. Restlessness arises when it comes into the impure body. सतयुग में भी देह होती थी, The body was there in the golden age as well. लेकिन वहाँ सतो प्रधान देह थी. But the body over there was Satopradhan. जो चोला था 5 तत्वों का बना हुआ, वो सतो प्रधान था. The body made of the 5 elements was Satopradhan. 5 तत्वों से चोला बनता है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश. The body is made of the 5 elements, isn't it? Earth, water, air, fire, ether. ये 5 तत्व सतो प्रधान. उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान. These 5 elements were Satopradhan. So the souls entering them were also Satopradhan. अब देह के सुख भोगते भोगते, 5 तत्वों के सुख भोगते भोगते आत्माएं भी तमो प्रधान हो गई.
And now experiencing the happiness of the body, experiencing the happiness of the 5 elements, the soul became tamopradhan. और 5 तत्व भी तमोप्रधान हो गए. And the 5 elements became tamopradhan too. अभी बाप आकर के रास्ता बताते हैं. Now the Father has come and shows the path कि तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बने. how we should become satopradhan from tamopradhan. क्या रास्ता बताते हैं. What path does he show? कौन बनाएगा तमोप्रधान को सतोप्रधान. Who will make the tamopradhan into the satopradhan? ये सारी दुनिया तमोप्रधान है. The entire world is tamopradhan. कैसे बनेगी. How will it become? कोई तो निमित्त बनेंगे. कौन निमित्त बनेंगे. Some will become instrumental. Who will become instrumental? आत्मा ही निमित्त बनती है. It is the soul which becomes instrumental. आत्मा है जो ऑलराउंडर पार्टधारी है. आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली है. उन आत्माओं के लिए बाप कहते हैं कि तुम पहले सतोप्रधान थे. The Father says for the souls who are the all-round actors who play the role from the beginning till the end. Previously, you were satopradhan. 100% शांति की दुनिया में थे. You were in a 100% peaceful world. 100% शांति तुमने भोगा. You experienced 100% peace. सुख तुमने भोगा. You experienced happiness. पीस प्रॉस्पेरिटी तुमने भोगी. You experienced peace and prosperity. तो तुमने भोगी है तो तुम ही पहचानते हो You have experienced, therefore you recognize कि आत्मा क्या है और आत्मा का बाप परमात्मा क्या है. what the soul is, what the Supreme Soul, the Father of the souls is. जिन्होंने ऑलराउंड पार्टी नहीं बजाया ड्रामा में. Those who didn't play the all-round part in the drama वो उतना नहीं पहचानेंगे. will not recognize to such an extent. जितना जितना जो आत्मा जैसा जैसा पार्ट बजाती है. What role which soul plays. जास्ती पार्ट बजाने वाली है तो जास्ती पहचानेगी. If it plays more, it will recognize more. कम पार्ट बजाने वाली है तो कम पार्ट बजे. If it plays less, it would recognize less. जैसे बैटरी होती है. It is like a battery. बैटरी बड़ी होगी If a battery is large, तो उसमें ज्यादा पावर भरेगी. ज्यादा लंबे समय तक चलेगी. it will be filled with more power. It will work for a longer time. छोटी बैटरी होगी If a battery is small, तो थोड़े समय तक चलेगी. it will work for a short time. ऐसे ये आत्मा रूपी बैटरीज है. In the same way, there are batteries in the form of the souls. हैं तो एक जैसी देखने में, By the looks, they are the same, लेकिन पावर उनमें नंबर बार भरती है. but they are filled with power number-wise. कोई तो इतनी पावर भरते हैं कि आज से लेकर के अंत तक 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते. Some are filled with such power that they remain happy for 80-83 births, from the beginning till the end. दुख नाम की चीज उनको भासती नहीं. They don't experience even a trace of sorrow or pain. हाँ, आखिर में तो सबको तो प्रधान बनना है. माया किसी को नहीं छोड़ती. At the end, all have to become tamopradhan. Maya doesn't let go anyone. क्या? What? इसलिए कहते हैं जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, For this reason, it is said that just like the Father is almighty, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है. so is Maya almighty. माया की लड़ाई भी आधा कल्प चलती है. The fight of Maya lasts for half a cycle. आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प For half a cycle, the kingdom of Maya goes on, and for half a cycle, मायापति भगवान का राज्य चलता है. the kingdom of the husband of Maya, God, goes on. तो दोनों की बराबर की टक्कर है. So the impact of both is equal. अभी अभी जीत किसकी होनी है? Now,
whose victory has to take place now. अभी तो भगवान की जितनी है. A student is saying, now God has won. अभी जीत होनी है तुम बच्चों की. Now your victory, children, has to take place. कौन से बच्चों की जीत होनी है? The victory of which children has to take place now? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उनकी पूरी जीत होनी है. Of those who took full 84 births, they have to gain complete victory. ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं. They play the all-round part. तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है कि हम पहले सतो प्रधान थे. Therefore, it sits quickly in their intellects that we used to be Satopradhan. अब हम तमो प्रधान बने हैं. अब हमको सबसे पहले सतो प्रधान बनना है. Now we have become Tamopradhan. Now we have to become Satopradhan first of all. ये तुम्हारी बुद्धि में आता है. This gets into your intellect. 83 जन्म 82 जन्म लेने वालों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है. This issue doesn't get into the intellects of those who take 83, 82 births. तो वो समझते हैं कि अभी 40-50 हजार वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं. So they think that now there are 40-50,000 years of the Iron Age. और तुम क्या समझते हो? And what do you understand? कि अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया गई कि गई. That now this old Iron-aged world is as good as gone. एटम बम बने पड़े हैं. The atom bombs are made. भगवान आया था. God has come. थोड़ी टाइम के लिए रुका है. A student is saying, they wait for a short time. हाँ, भगवान आया था और आते ही एटमिक एनर्जी बनना शुरू हो गई. Yes, God had come, and as he came, they started to make the atomic energy. इसलिए भगवान जिस तन में आता है उस तन के टाइटल के साथ ही लगाते हैं भक्ति मार्ग में हर हर बम बम. For this reason, on the path of the religious devotion, along with the title of the body in which God comes, they apply Har Har Bam Bam. हर कहते हैं पापों का हरण करने वाला. They call Har the one who removes the sins. दुनिया में जो पाप बढ़ जाते हैं उन पापों का हरण करने वाले का नाम रखा है हर. The name Har is given to the one who removes the sins which increase in the world. और वो हर है पापों का हरण काहे से करता है? And how does that Har remove the sins? बम छूटते हैं तो पापों का हरण हो जाता है. The bombs are discharged and the sins are removed. पहले ज्ञान के बम छोड़ता है. First, he discharges the bombs of knowledge. क्या? What? दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल होती है. मकान भी पहले. Everything in the world takes place in the subtle first. Then it takes place in the physical. A house as well. First. पहले दिमाग में नक्शा आएगा. First, the plan will arise in the mind. कितना सूक्ष्म नक्शा बनता है अंदर अंदर, कोई बाहर से देख भी नहीं सकता. What a subtle plan is made inside. No one can see it from outside. बाद में नक्शे पर कागज के ऊपर नक्शा बनाया जाता है. Later on, the plan is made on paper, on the map. फिर छोटा सा ढांचा बनाया जाता है मकान का. Later, a little model of the house is prepared. बाद में स्थूल मकान खड़ा कर दिया जाता है. And after this, the physical house is erected. तो ऐसे ही ये सृष्टि का निर्माण भी पहले ब्रह्मा के मन के संकल्पों में होता है. So, in the same way, the construction of this world first takes place in the thoughts of Brahma. इसलिए गायन है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई. This is why there are the songs of praise that the world was created through the thoughts of Brahma. अब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी. If the world is created through the thoughts of Brahma, तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती होगी? won't the world be created through the thoughts of the Brahmins? वो अपना योगदान नहीं देंगे? Won't they give their contribution? ब्रह्मा है मुख्य. Brahma is the main.
तो उसकी भुजाएं भी है। सजी भुजा। There are also his arms. भुजाओं के बगैर काम थोड़े ही होगा। He will not work without arms. तो भुजाएं भी अपना सहयोग देती हैं सृष्टि निर्माण में। The arms also cooperate in the construction of the world. हाँ, जो भुजाएं जितना सहयोग देती है उतनी प्राप्ति करती है। The arms receive the rewards to the extent they cooperate. जो जितनी स्थापना का काम करेगा वो उतनी प्राप्ति करेगा। स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा। One will receive the rewards to the extent one will do the work of establishment. If one establishes, one will also sustain. स्थापना नहीं करेगा तो पालना भी नहीं करेगा। If one doesn't establish, one won't sustain either. तो स्थापना करना अच्छा या विनाश करना अच्छा? So, is it good to establish or is it good to destroy? स्थापना करना अच्छा। Students are saying it is good to establish. कंस्ट्रक्शन करना अच्छा और डिस्ट्रक्शन करना अच्छा नहीं है। It is good to construct and it isn't good to destroy. डिस्ट्रक्शन करने वाले राजाई प्राप्त नहीं करते Those who destroy don't receive the kingdom, और कंस्ट्रक्शन करने वाले, स्थापना करने वाले राजाई प्राप्त कर लेते हैं। and those who construct, those who establish, receive the kingdom. तो तुम बच्चे हो स्थापना, पालना और विनाश तीनों का कार्य करने वाले। So you children do the three works: establishment, sustenance, and destruction. लेकिन विनाश तुम डायरेक्ट नहीं करते हो But you don't destroy directly. कि कोई स्थूल में एटम बम बनाओ या बाहुबल चलाओ या तोप बंदूक चलाओ, So that someone would bring a physical bomb or use the physical power or use a cannon or gun. ये तुम्हारा डायरेक्ट काम नहीं है। This is not your direct work. तुम्हारे संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि पर विनाश की लीला खड़ी हो जाती है। The play of the destruction of this world will arise just from your thoughts. जैसे रामायण में कहा भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। Just like it is said in the Ramayana, Bhrikuti Vilash Srishti Laya Hoy. क्या? What? एक क्रोध की झलक भी आ गई तो भी विनाश हो जाता है। Destruction takes place even if a spark of anger aroused. कब? When? जब योग की पावर पूरी बढ़ जाएगी। When the power of yoga fills you completely. इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे संकल्प करना है। For this reason, Baba says, one should have good thoughts. क्या? हमारे थोड़े से संकल्प से, दुष्ट संकल्प से दुनिया का बहुत अकल्याण हो जाएगा। The world will get hurt a lot just through our few thoughts, through the corrupted thoughts. अभी हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे हमारे मन के अंदर से कोई दुष्ट संकल्प ना निकले। Now we should practice in such a way that from our mind no corrupted thoughts will arise. जो भी संकल्प निकले सत संकल्प निकले। Whatever thoughts arise, let the true thoughts arise. सदगति के संकल्प निकले। The thoughts of the liberation in life should arise. कोई की दुर्गति हमारे संकल्प से न होने पाए, भले कोई हमारा बुरा कर रहा है। Our thoughts should not bring about someone's downfall, even if someone is defaming us. हमारे लिए बुरा सोच रहा है, He is thinking bad about us. हमारे लिए बुरी वाचा निकालता है, गालियां देता है, He is talking bad to us, abuses us, दुष्ट वाइब्रेशन फैलाता है, spreads the corrupted vibrations. तो भी Even though, हमको क्या समझना है? what should we think? अरे पूर्व जन्म में हमने इसके साथ ऐसा किया होगा। Oh, in the previous births, I must have done something like this to him. तो उसका रिटर्न हमको दे रहा है। So he is returning this to me. हिसाब किताब पूरा हो रहा है। The karmic accounts are being settled. बाकी जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो कोई हमको दुख नहीं देगा। Otherwise,
When our karmic accounts are settled, no one will cause suffering to us. लक्ष्मी नारायण जो बन जाएंगे, उन लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देने वाला होगा क्या? होगा? नहीं. Will anyone cause suffering to those who will become Lakshmi and Narayan? Will they? Students are saying no. No. जो सुखदायी आत्मा बनेगी, संपूर्ण आत्मा बनेगी, उसको कोई दुख नहीं दे सकता. So no one can cause suffering to the one who will become the soul giving happiness, the complete soul. तो अपनी सृष्टि हम अपने आप निर्माण कर रहे हैं. We ourselves are constructing our own world. अज्ञानी लोग कह देते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है. The ignorant people say, God himself gives happiness. God himself causes suffering. लेकिन भगवान दुख देने वाला तो दुखदाता कहना चाहिए भगवान को. But if God causes suffering, he should be called bestower of suffering. भगवान को कोई दुखदाता कहता है क्या? नहीं. भगवान को क्या कहा जाता है? Does anyone call God bestower of suffering? Students are saying no. No. What is God called? सुखदाता कहा जाता है. He is called bestower of happiness. भगवान को तो कोई दुखदाता नहीं. रावण है जो रुलाता है, तो उसका नाम ही पड़ गया रावण. God isn't any bestower of suffering. It is Ravan who makes people cry. Therefore, he was named Ravan. रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है सो रावण. Ravayata Lokan, the one who makes people cry, is Ravan. और मनुष्यों को जो रमण कराता है सुख में, वो राम. And the one who makes people delighted in happiness is Ram. नाम ही ऐसा पड़ जाता है. कैसा? काम के आधार पर. Even the name like this is given. What sort of name? On the basis of the task. जैसा जिसका नाम, जरूर उसने वैसा काम किया. इसलिए शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो सब अर्थ सहित है. Certainly one's name is like the task he performed. For this reason, all the names in the scriptures are meaningful. व्यर्थ कोई नाम नहीं है. There isn't any meaningless name. चाहे महाभारत में नाम हो, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, ये सब अर्थ सहित है. Whether they are the names in the Mahabharata, Duryodhan, Dushasan, Yudhishthir, all of them have their meanings. चाहे भागवत में हो, चाहे रामायण में हो, Whether they are in the Bhagavat, whether they are in the Ramayana, और चाहे देवासुर संग्राम में हो, or whether they are in the Dev Ashur Sangram. जो भी नाम है, वैसा वैसा उन्होंने काम किया है, तो वैसे वैसे उनके नाम रख दिए. All the names. They were given the names according to the task they performed. तो तुम बच्चे नई दुनिया को जानते हो. So you children know the new world. कि नई दुनिया कैसे स्थापन हो, How the new world is established. कैसे बनती है नई दुनिया. How is the new world made? नई दुनिया का मूल संकल्प क्या है? What is the main thought of the new world? Students are silent. वो कौन सा संकल्प है पहला जिससे नई दुनिया की बनने की शुरुआत होती है? Which is the first thought from which the beginning of the creation of the new world took place? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. I am not a body. I am a soul. स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग बनाना. To be stable in the stage of the self means to build paradise. स्व से बनता है स्वर्ग. Paradise is made from the self. और परचिंतन से पतन की जड़. And thinking about the others is the source of downfall. दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है. One shouldn't look at the others. What is the other doing? दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है. Whatever the other is doing, he is doing for himself. अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने लिए कर रहा है. Whether he does something good
or he does something bad, he is doing it for himself. हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा. Whatever we will do, we will receive it. इसलिए कर्म की थ्योरी पर पक्का रहना चाहिए. For this reason, one has to rely firmly on the theory of the action. कर्म की थ्योरी पर कौन पक्के रहेंगे? Who will rely firmly on the theory of the action? जो आत्मा को माने. Those who will believe in the soul. नास्तिक लोग आत्मा को ही नहीं मानते. The atheists don't believe in the soul. तो पुनर्जन्म को मानेंगे? पुनर्जन्म को भी नहीं मानते. Then will they believe in the rebirth? They don't believe in the rebirth either. तो जब पुनर्जन्म को ही नहीं मानेंगे, So if they don't believe in the rebirth, आत्मा को ही नहीं मानेंगे, तो स्वर्ग नरक को क्या मानेंगे? if they don't believe in the soul, then how will they believe in paradise and hell? न स्वर्ग को मानेंगे, न स्वर्ग के रचयिता को मानेंगे. Neither will they believe in paradise, nor will they believe in the creator of paradise. स्वर्ग को भी नहीं मानते, स्वर्ग के रचयिता को भी नहीं मानते, स्वयं स्थिति को भी नहीं मानते, अपनी देह को ही सब कुछ समझते. They don't believe in paradise. They don't believe in the creator of paradise. They don't believe in the stage of the self either. They consider their body to be everything. कि जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम हैं. देह अहंकार में रहते हैं. We exist until we are alive. They remain in body consciousness. कि हम देह हैं, बस देह के अलावा और कुछ नहीं. We are bodies, that's it. There isn't anything else apart from the body. तो उससे दुनिया में बनता है दुख, रौरव, नरक. From this, suffering arises in the world. The horrible hell. देह समझने से. From considering the self to be a body. और आत्मा समझने से, स्व को पहचानने से स्वर्ग बनता है. And paradise is made from considering the self to be a soul, from recognizing the self. तो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, रात में सोते भी अपन को स्टार आत्मा समझने की तांत लगी रहनी चाहिए. So, from the morning till the evening, and from the evening till the morning, also while sleeping at night, one should keep on forming the habit of considering the self to be a soul star. जितना जितना हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा बाप हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा. The more stable we will be in the spiritual stage, the more will the Supreme Soul Father run after us. स्वतः ही उसकी याद आएगी. His remembrance will come on its own. आत्मा की स्थिति वाला जो है, वो ही सर्विस कर सकता है. Only the one who is in the soul conscious stage can do the service. जो देवान में रहने वाला है, कितनी भी भाग दौड़ करे, कितनी भी भाषणबाजी करे, And the one who remains in the consciousness of the body, it doesn't matter how much he would run, how many lectures he would give. उससे डिसर्विस ही होगी, सर्विस नहीं होगी. कुछ नहीं पाते. Only disservice will result from it. There won't be any service. इसलिए मुरली में कहते हैं कि अपन को आत्मा समझकर दूसरों को ज्ञान समझाओ. For this reason, it is said in the Murlis, consider yourself to be a soul and explain knowledge to the others. आत्मा समझकर नहीं समझाते हैं, देहभान में रह करके दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो डिसर्विस हो जाती है. If you don't consider yourself to be a soul and explain, if you narrate knowledge to the others remaining in body consciousness, it will become disservice. जैसे एडवांस वाले भी बहुत से हैं. Just like there are many in the advanced. कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी मिलेगा, When they meet with some Brahma Kumar Kumari, तो बड़े नशे में, मगरूरी में आकर के उनको सुनाएंगे. they will explain to them with great intoxication, arrogance. ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो डाउन हो जाते हैं. They will tell them such things that those Brahma Kumar Kumari will become depressed.
तो सर्विस की या डिसर्विस की? Disservice. So, did they do service or did they do disservice? Students are saying disservice. ईश्वर का ज्ञान सुना करके किसी के चेहरे में खुशी लाएं, ये सेवा हुई? Was it the service when, from narrating the knowledge of God, we would bring happiness on someone's face? या किसी का चेहरा लटक जाए, हम अपने को ऊंचा साबित कर दें और उसे नीचा साबित कर दें, तो सर्विस हुई? Disservice. वो तो डिसर्विस हुई। Or was it the service when someone's face would fall? We would prove ourselves to be higher and we would prove the other to be lower. Students are saying, this was disservice. This was disservice. ज्ञान का मतलब ही है जानकारी। काय की जानकारी? सुख की दुनिया की जानकारी, सुखदाता की जानकारी। The meaning of knowledge is information. The information about what? The information about the world of happiness. The information about the bestower of happiness. सुखदाता कैसे हम आत्माओं को आत्म की स्थिति में स्थित करा के हम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है? How does the bestower of happiness make us stable in the spiritual stage and establish paradise through us children? आत्मा अभिमानी बच्चे ही स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनते हैं। Only the soul-conscious children become instrumental for the establishment of paradise. देह अभिमानी स्वर्ग की स्थापना के निमित्त नहीं बनते। The body-conscious ones don't become instrumental for the establishment of paradise. कितने बनेंगे आत्मा अभिमानी? 4.5 How many will become soul-conscious? A student is saying 450,000. 4.5 लाख ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो जीते जी शरीर के रहते हुए भी आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली होंगी। 450,000 such souls will emerge who, while being alive, remaining in the body, will become stable in the soul-conscious stage. जब वो तैयार हो जाएंगे आत्म की स्थिति में, फिर इस बम्बोर को आग लग जाएगी। When they are ready in the soul-conscious stage, then this haystack will be set on fire. क्यों? Why? 4.5 लाख जो शरीर से है और उनमें प्रवेश करने वाली जो 4.5 लाख आत्माएं हैं राधा कृष्ण जैसी, उनके अलावा और कोई भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं। No one else will become complete in 16 degrees apart from the 450,000 who remain along with the bodies and the 450,000 like Radha Krishna who enter them. जो भी इस सृष्टि पर है वो सब अधूरी आत्मा बनेंगे। Whoever else is on this world, all of them will become incomplete souls. अधूरी आत्म की स्थिति वाली बनते हैं। They are in the incomplete soul conscious stage. इसलिए 4.5 लाख वो तैयार हुए और दुनिया का विनाश। This is why when 450,000 are ready, the destruction of the world, students are saying, takes place. हाँ, वो लास्ट विनाश, ये अभी छोटा मोटा नहीं। Yes, that last destruction, not just any minor one. कि अभी अफगानिस्तान में थोड़ा सा हो गया, अभी इराक में थोड़ा सा हो गया, नहीं। Now, something small happened in Afghanistan. Now in Iraq, something small happened. No. ऐसे एक एक शहर तो ये जलते ही रहेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की तरह। In this way, one city after another will keep on burning down, like Hiroshima and Nagasaki. लेकिन लास्ट में जो धमाके होंगे उसमें सारी दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सबको शरीर छोड़ना पड़े। But in the crash, which will be at the end, the entire world, all except for the 450,000, will have to leave their bodies. 4.5 लाख में भी बहुत से ऐसे विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की छिलके वाली,
उनको भी सेक लगेगा। Even among the 450,000, there are many Vidharmi souls covered by the other religions. The heat will strike them as well. Vidharmi, the souls who belong to the religions different than that of the religion of the Father. उनको भी शरीर छोड़ना पड़े क्योंकि दूसरे धर्म के हैं। They also will have to leave the bodies because they belong to other religions. थोड़े समय के लिए आत्मिक स्थिति धारण कर पाते हैं। They can assimilate the spiritual stage for a short time. लंबे समय तक आत्मिक स्थिति धारण नहीं करते। They don't assimilate the spiritual stage for a long time. नहीं तो राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से लेकर के 36 तक 18 साल तक जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाली आत्मा है वो पक्की देवता धर्म की है। The souls who assimilate the spiritual stage in the period of 18 years since the birth of Radha Krishna takes place until 36 are firm in the deity religion. उनके शरीर जो कंचन काया बनेंगे उस कंचन काया वाली आत्माएं जो हैं उनसे जन्म लेने वाले बच्चे वो अविनाशी हैं। Their body will become golden. Those souls who make their body golden and the children born from them are imperishable. 5000 वर्ष तक पार्ट बजाते हैं। They play the roles for 5,000 years. क्यों? Why? क्योंकि सतयुग में जो जन्म लेंगे पहले जन्म में वो कौन से धर्म की आत्माएं जन्म लेने वाली होंगी? Because to which religion will those who take birth in the golden age in the first generation belong? सतयुग के पहले जन्म में दूसरे धर्म की छिलका वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी। हाँ? In the first generation of the golden age, will there be any souls covered by the other religions or not? A student is saying, they won't be. सतयुग में देवता जो सनातन धर्म आत्मा होता है वही होता है। वही होंगी। A student is saying, in the golden age, there are only the deity souls of the ancient deity religion. Only they will be present. होंगी, बाकी धीरे धीरे बाद में उतरते रहेंगे। They will be present. The others, slowly, a student is saying, they will come later. They will keep descending. धीरे धीरे उतरेंगे। 84 जन्म तो होंगे। They will descend slowly. They will have 84 births. जो भी बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं उनके 84 जन्म तो पूरे होंगे। All the 450,000 seed souls will have full 84 births. भले पहले जन्म की लास्ट में आवे, लेकिन Even if they would come last in the first generation. But वो आत्माएं जो है गैप मार देंगी। those souls will have a gap. जैसे राधा कृष्ण की आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पे कितना गैप मारती हैं। Just like the souls of Radha and Krishna, how big gap do they have on this world-like scene? 50 साल। 69 में शरीर छोड़ा और 18 में जन्म होगा। कितने साल हुए? A student is saying 50 years. He left the body in 69 and the birth will take place in 18. How many years? 50 साल हो गए ना, तो उनको ही 50 साल लग जाता है। There are 50 years, aren't there? So, it will take them 50 years too. तो वो तो है चंद्रवंश की पक्की। कौन? They are firm in the Moon dynasty. Who? ब्रह्मा और सरस्वती। वो तो चंद्रवंश के हीरो हैं। Brahma and Saraswati. They are the heroes of the Moon dynasty. तो उनको ही जब 50 साल का टाइम लग जाता है, Since it takes them 50 years, तो जो और धर्म के जो बीज हैं जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है उनके और भी टाइम कम हो जाता है। then the time of the others who are seeds covered by the other religions will become even less. तो वो जन्म लेते रहेंगे। So
they will keep taking birth. कब तक लेते रहेंगे? Till when will they keep taking birth? जब तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऊपर से नीचे न उतर आए. Until the soul who becomes converted into Islam descends from above. वो कब उतरेगी? When will it descend? दापर में न? A student is saying something. In the Copper Age. No. सतयुग के पहले जन्म के अंत में. At the end of the first generation in the Golden Age. सतयुग को का पहला जन्म तब तक रहेगा तब तक जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं राधा कृष्ण जैसी वो उतरती रहती है. As long as the first generation of the Golden Age lasts, the souls of the Moon Dynasty like Radha and Krishna keep descending. वो आधार मूर्त आत्माएं भी उतरती है और वो बीज रूप आत्माएं भी उतरती है. Both the root souls and the seed souls descend. क्या? What? सारी आत्माएं उतर आती है तब फिर जाकर के वो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है बीज वो उतरेगी. When all the souls descend, that seed soul of Islam religion will descend. नहीं वो क्या नाम ये इस्लाम धर्म का जो आधार मूर्त है नारायण. No, that one who is the root soul of Islam religion, Narayan. वो नारायण ऊपर से आकर के जन्म लेगा. That Narayan, having come from above, will take birth. और उसको जन्म देने वाला भी कौन होगा? And who will give birth to him? नारायण को जन्म देने वाला नारायण ही तो होगा कि कोई दूसरा होगा? नारायण होगा. नारायण होगा. The one who gives birth to Narayan will be Narayan himself. Or will it be someone else? He will be Narayan. तो कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनने के बाद अपनी आयु पूरी होने पर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो नारायण है उसको जन्म देती है. So the soul of Krishna, after becoming Narayan, when he is of age, gives birth to the Narayan who gets converted to the other religion. फिर दूसरों का जन्म होना शुरू हो जाता है. And then the birth of the others start. ऐसे ही आगे चल करके ये जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी. In the same way, the population will increase in the future. पहले जन्म में 9 लाख से कितने बनेंगे? दुगटी हैं? दुगटी. How many will become from the 900,000 in the first generation? A student is saying double. 9 लाख से बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे. It will increase from 900,000. It will increase a little. It will not increase much. और दूसरे जन्म में? And in the second generation? और ज्यादा बढ़ेंगे. ऊपर से और ज्यादा उतरेंगे. A student is saying it will increase more. More will descend from above. तीसरे जन्म में और ज्यादा उतरेंगे. इस तरह 8 जन्म में 2 करोड़ आबादी हो जाएगी. In the third generation, even more will descend. In this way, in 8 births, the population will become 20 millions. माने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे जन्म बीतते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से उतरने वाली आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी. It means that as time goes by, as the generations pass, the number of the souls descending from above will increase. ऐसे ऐसे सृष्टि बढ़ती है. In this way, the world gets larger. तो तुम तो नई दुनिया को जानते हो. तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही नई दुनिया सुखधाम होगी. So you know the new world. For you, it is as if the new world, the abode of happiness, is going to be just tomorrow. और कलयुग में मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष है. And in the Iron Age, for the human beings, there is 40-50,000 years. उनको पता ही नहीं है कि शांति कब थी. They don't know when there was peace. कहते हैं विश्व में शांति हो जाए. They say, let it be peace in the world. तुम जानते हो विश्व में शांति थी. You know that there used to be peace in the world. विश्व में शांति तो विश्व का पिता ही करेगा.
the Father of the world himself will create peace in the world. घर में अशांति होती है, If there is restlessness at home, बच्चे बहुत अशांति मचाते हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? पिता। घर का बाप ही कंट्रोल करते हैं। if the children are very restless, who controls them? As student is saying, the father of the house himself controls them. तो तुम स्थापन कर रहे हो विश्व में शांति। So you are establishing peace in the world. अभी ये बातें सबको समझावे कैसे? Now, how would we explain these issues to everyone? कोई कहते हैं सेमिनार करें, क्या? Some say, let's organize the seminar. What? ऐसी पॉइंट सेमिनार में निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना मनुष्यों को। Such points should be picked up in the seminars which the human beings want very much. विश्व में शांति के लिए शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अशांति तो बहुत है। They keep on making noise for peace in the world, because in this world there is a lot of restlessness. क्यों अशांति बहुत है? हैं? Why is there a lot of restlessness? घर में एक धनी धोरी हो तो शांति होगी, या घर के अनेक धनी धोरी हो जाए तो घर में शांति होगी? Will there be peace if there is one master at home, or will there be peace at home when there are several masters? जो एक होता है तो शांति होगी। A student is saying, where there is one, there is peace. एक घर में अगर वैश्यालय खुल जाए तो वैश्यालय में तो अशांति होगी ना। If a brothel is opened in one house, there will be restlessness in the brothel, won't there? एक धनी धोरी होगा तो शांति होगी। तो ऐसे ही ये दुनिया का हाल हो गया है। If there is one master, there will be peace. The state of the world became the same. अभी सब बाप बने बैठे हैं, Now everyone has assumed the position of the father. सब भगवान बन करके बैठे हैं। जो जहाँ जाओ वहाँ तुंडे तुंडे मत भिन्ना। Everyone has assumed the position of God. Wherever you go, each mouth gives a different opinion. सब अपनी अपनी अलग अलग अपनी बातें सुना रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ऐसे वो हम। Everyone is giving a different opinion. No one even knows what the truth is, yet they say, Shivoham. I am Shiv. तो भगवान बाप आकर के फिर असली बात बताते हैं और सबका भंडाफोड़ हो जाता है। Therefore, God the Father comes and tells the true things, and the secrets of everyone get exposed. ये लक्ष्मी नारायण चित्र This picture of Lakshmi and Narayan सबके सामने रखना है must be placed in front of all. कि देखो सत्युग के आदि में इनका राज्य था। Look, there used to be their kingdom at the beginning of the Golden Age. जिनका सत्युग के आदि में राज्य था वो ही अब फिर से आने वाले हैं। Those whose kingdom used to be at the beginning of the Golden Age will now come again. उनका ही फिर राज्य होगा। There will be their kingdom again. तो सत्युग प्रत्यक्ष हो जाएगा। The Golden Age will be revealed. इनका जब राज्य था तब विश्व में शांति थी। At the time of their kingdom, there used to be peace in the world. अभी तो सारे विश्व में अशांति है। क्यों? Now there is restlessness in the entire world. Why? क्योंकि जब इनका राज्य था तो शांति थी, अब ये प्रजा की भी प्रजा बने हुए हैं। It's because at the time of their kingdom, there used to be peace. Now they have become the subject of the subjects. तो जो होना चाहिए ऊंची गद्दी के ऊपर, As a result, those who should be on the throne, भगवान जिनको ऊंची गद्दी देता है लायक समझ करके, to whom God gives the throne having considered them to be worthy, वो नीचे बैठा दिए गए। they were seated low. तो दुनिया में अशांति होगी, अशांति होगी, अशांति होगी। Therefore, will there be restlessness in the world, or will there be peace? There will be restlessness. ओम शांति।